Okay, let's check the comment section. First of all, there is a question from Asim Khan. Asim Khan is saying that, sir, what does the KP government do? Yeah, Asim Khan, what can I reply to you? KP government क्या कर रही है, मैं क्या बता दूँ आपको? हर दूसरे दिन वो इस्लामाबाद में ही बैठी रहती है, तो हुकूमत कैसे करेगी? आसिम खान, हमारा सिस्टम तो वैसे भी इनकी इंतहाई ख़राब है, आपके वर्स है। और दूसरे दिन जब हर दूसरे दिन वो फेडरल कैपिटल में जाएगी, वहाँ पर वो जो है ना सिट इन करेंगी, धरने करेंगे, और ये जो है ना पूरा सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस का पूरा उसको पैरालिसिस करेंगे। तो गवर्नमेंट किस तरह आगे जाएगी, वो किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करेगी? और सबसे बड़ी बात है कि हमारी खुद की जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इस प्रोविंस का, उसकी हालत के बारे में तो भी ना पूछें। तो आसिम खान, और सिस्टम विल बी वेरी बैड till next 4 year, till next election. Next question, sir, how can we learn English with fluency? Okay, this question is being asked by Rohel. So Rohel, I may answer your question that you can say a lot of time gave you a very positive response that English language is actually the language, or we can say it's a system of communication in which we talk to peoples in our surrounding. You know, the very important thing, the very logical thing which I want to deliver to you, that is, if you do not start conversation with people or interaction with people, so you will not be able to even talk. And this is actually, I you can say more than 1,000 times express this word very confidently, that you may start from the scrap, you may start from the low level, you may start from the, you can say, from not from nothing. If you are starting from nothing, if you have nothing in your skull, in your mind, in your, you can say, brain, so you will be able to speak English. You can say you need to start from scratch. And if you want to create a conducive environment for yourself, so I may tell you, this is a surety to you that you can easily speak English. So you may ask another question. Let's say another question take by someone, sir, you can say, what are the procedure to speak English? So this question is being asked by अली, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। रोज़ाना कोशिश करनी है कि 1-2 घंटा इंग्लिश के लिए मुख्तस करें। प्रैक्टिस आप इस अंदाज से करें। मैं आपके लिए एक मोड आपको देता हूँ, एक मॉडल देता हूँ, आप इन पर कोशिश करें। द वेरी फर्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वर्ब है, स्पीक, हो गया, क्लियर हो गया, और मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ 104 सेंटेंसेस। तो मैं किस तरह करूंगा? तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करें। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश, हाउ डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, व्हेन डू आई स्पीक इंग्लिश, व्हेन डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, एंड वेयर डू आई स्पीक इंग्लिश, वेयर डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, एंड we can say, when do I speak English, when do I not speak English, what do I speak English, what do I not speak English, we speak English, we do not speak English, do we speak English, do we not speak English, how do we speak English, how do we not speak English, and when do we speak English, when do we not speak English, where do we speak English, where do we not speak English, they speak English, they do not speak English। इसी तरह I, we, you, they, प्लूरल नाउन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपने प्रैक्टिस करना है, अगेन एंड अगेन करना है। और आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी ज़बान की जो क्लोज सेल्स है वो ओपन होती जाएगी और आपकी ज़बान फ्लोरिश हो जाएगी। एंड nobody could beat you in your fluency. So once you start your rhythm, once you start your fluency, and this is my surety, this is my guarantee with you, that you may be able to speak English if you are practicing again and again in your daily colloquial. And this is actually the habit which you addict yourself, or which you mad or form for yourself. So once you formulate this habit, you will be able to speak English. And this is the reason which I am going to feed you ever and anon in my every video. And you may focus that I am very asserting on your spoken. So if you are not, if you're just only giving focus to you can say your grammatical part, or you can say written English, so you may not speak very well. But you need to give a lot of concentration, focus to your spoken. So if you are giving your full-fledged preparation to your linguistic, so you may be able to convince